Hello, welcome everyone. Good evening. Good evening. Good evening. So I'm guessing you all can hear me anyway. So that's a good sign. All right. So very interesting week, guys. Everyone's had we've discussed बैंक निफ्टी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक एक स्ट्रैटेजी जो 2 हफ्तों से बहुत अच्छा चल रहा है एंड पीपल हैव मेड मनी एंड ऑफ कोर्स बोथ साइड बाइंग एंड सेलिंग buying in Nifty and selling in Bank Nifty, both side we've made money. Now, of course, uh, we don't we're not going to elaborate on that right now, but we are going to discuss stocks and the week analysis that we do. So let's hop on. Let's start. All right, so I'm just gonna start here. So I've got about, I don't know, 22 stocks, but we're gonna go through them and understand कि कौन सा क्यों है और किस लिए लिया गया है. So let me just fix the layout. So I've got a weekly chart, I've got a daily chart plotted here, and let's see. So the first one we have is Adani Enterprise. So I've got like a kind of a wedge that I've drawn, and ये list में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे bearish divergence है weekly chart में, but इसका low टूटना जरूरी है, which is basically this level here. ठीक है, ये टूटना जरूरी है तब जाके it might correct till the EMAs in the weekly chart at least. तो वैसा कुछ होने के लिए ठीक है. अब ये कॉन्ट्रा ट्रेंड है, जनरली हम लोग हमेशा विद द ट्रेंड डिस्कस करते हैं. सो ऑफ कोर्स it's okay if you don't like a counter trend trade and you avoid this, which is absolutely fine. But क्योंकि यहाँ पे एक weekly bearish divergence है, हमने उसको लिस्ट में डाला है. देन हमारे पास एशियन पेंट्स है, इसमें वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस है. नाउ कपल ऑफ डोजीज अर्लियर एंड देन दिस कैंडल हियर दिस वीक इज अ ब्रिलियंट white candle with an uptick in the weekly MACD as well, which suggests that it might go higher. Now of course इसके लिए भी इसका मोमेंटम, मतलब इसका जो हाई है ये टूटना जरूरी है. दैट मीन्स द मोमेंटम इज ऑन द अपसाइड. उस कंफर्मेशन के लिए रिमेंबर आपका पहला टारगेट अगर ये ऊपर जाता है देन दिस इज अ गैप इन द डेली चार्ट. सो मे बी इट कम्स टिल हियर बिफोर इट डज एनीथिंग एल्स. So because weekly में बढ़ है, so you might consider this as a contra trend trade as anyway. So let's go to the monthly chart. एक बार monthly chart देखते हैं. So nothing special to be honest, but हाँ है तो सही. So maybe EMA तक आ सकता है, maybe sideways चल सकता है, maybe इसका move इतना strong नहीं हो, ये भी हो सकता है. ठीक है, but है divergence. Now we come to Bharti Airtel. Airtel is in the list. It doesn't have a divergence, but आप देख सकते हो कि weekly chart में consolidation है, daily chart में corrective wave सा लग रहा है, and ये EMA पे आके hourly chart में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे एक bullish divergence बनाया था. Now of course the best possible way is if it kind of breaks this trend and goes above the MCPR. अगर इसके ऊपर जाता है then that would be considered as a decent entry point or something that I would be interested in. But otherwise, you can wait. आप इसका wait कर सकते हैं before it does anything. So you don't have to act on it immediately. इससे भी बेहतर सेटअप शायद हमें मिल सकते हैं. फिर हम जाते हैं चंबल फर्टिलाइजर. नाउ चंबल फर्टिलाइजर वीकली EMA and daily bullish divergence with a 012 setup. So you can see यहाँ पे एक पुल बैक है 78.6% तक का एंड इसका टारगेट ऊपर हो सकता है. नाउ ऑफ कोर्स दिस सीम्स लाइक अ गुड सेटअप एज वेल. वीकली कैंडल इज आल्सो डिसेंट एंड इफ यू गेट अ फॉलो थ्रू अभी भी ये अपॉर्चुनिटी दे सकता है. नाउ इफ आई प्लॉट, these are all monthly EMAs guys, so we don't have a weekly EMA plotted. These are all monthly EMAs. तो अगर इसके ऊपर जाता है या आपको एक ब्रेकआउट देता है then this is possibly a decent setup चंबल फर्टिलाइजर में. ठीक है, then we have a City Union Bank.
Now this, I think this is in the list just because support level है, यहाँ से ऊपर गया, फिर ये पुल बैक आया, फिर यहाँ पे आपको एक डेली में बुलिश डाइवर्जेंस मिल रहा है जो कि सेंसर्ड है काइंड ऑफ, इट काइंड ऑफ गिव यू रीटेस्ट इन द आरएसआई एज वेल। तो यहाँ भी अपटिक है। सो अगर अगेन इसको आर्ली चार्ट में खोलो, इसका yeah, see, beautiful, right? Narrow monthly CPR fall. Now it might approach the CPR once again before doing anything. So maybe ये 10 दिन जो बचे हैं ट्रेडिंग के इस महीने में, so maybe it spends that time coming till the CPR also. So that is a possibility. Again, अगर आपको इसमें से कोई भी काउंटर ट्रेंड अच्छा नहीं लग रहा है, आप काउंटर ट्रेंड मत लो, विद द ट्रेंड का ज्यादा ट्राई करो। इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू आर ट्रेडिंग विथ द ट्रेंड। ओके, फिर हम आते हैं दीपक नाइट्रेट पे, सॉरी, दीपक नाइट्रेट पे यू कैन सी दैट इट इज एट वीकली ईएमए and then there is a bullish daily divergence, right? Again, seems like a decent setup, has gone up as well, is doing well, no problem here at all. So इसको भी आप अगेन यहाँ आप देख सकते हो, ये मंथली सीपीआर यहाँ पे आपको मिला था S1 के आसपास, सीपीआर पे आ चुका है, नैरो है। तो या तो ट्रेंडिंग है या तो ये आपको मोमेंटम नहीं देगा, मतलब वीकली हाई नहीं टूटेगा एंड इट विल गो क्रैश। Otherwise, it will go gap up and then break this CPR and go on the higher side. So that is also possible, right? That is one possibility because daily divergence and everything है. So लग रहा है कि वो हो सकता है। Then we have escorts. Now escorts again, beautiful setup. Corrective wave, bullish divergence, not only in daily chart जो हमने last time discuss किया था RSI and MACD में, but weekly में भी bullish divergence बन गया है. If you can see here, weekly chart also has a bullish divergence with a very, very good piercing pattern here. So now, once again, if it kind of breaks, so as I said, if it kind of goes above this, does this, that should be the plan. But will it pull back a little and then do this? हो सकता है, who knows. But if you do get a follow through above the weekly highs, that is your plan. So अगर आप monthly CPR भी देखोगे, नैरो है, अगर इसके ऊपर जाता है and ये ब्रेकआउट देता है, देन आप आर्ली चार्ट खोल के रखो, इसको थोड़ा रिफाइन कर लो अपने लाइंस को, ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज और मिले। सो व्हेन आई एम सेइंग रिफाइन द लाइंस, ये जो आपको, मैं इसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि यू कैन सी दिस प्रॉपर्ली। ये जो आपको लाइन दिख रहा है, इसको आप थोड़ा रिफाइन कर सकते हो, एंड इन लेवल्स को अगर ब्रेकआउट देता है देन यू कैन एंटर एज वेल, और ऑफ कोर्स यू गेट मोमेंटम, वीकली हाइस टूटता है, देन यू कैन गेट इन विद द मंथली सीपीआर एज योर रिस्क। ओके, सो दिस सीम्स लाइक अ डिसेंट प्लान आई बिलीव एस्कॉर्ट्स में। फिर हम आते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस। HDFC लाइफ इंश्योरेंस में भी विद द ट्रेंड नहीं है, यू कैन सी इट हैड अ बेरिश डाइवर्जेंस, फेल, अभी EMA तक आ सकता है, लेकिन डेली में इसके पास 012 सेटअप बनाया हुआ है। सो इफ आई प्लॉट फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स एज आई सेड 012 इसका मोमेंटम जरूरी है चेक करना। तो हम अगर आर्ली चार्ट में देखेंगे, सो इट्स अ वाइड मंथली सीपीआर, वही रेजिस्टेंस था पहले भी। सो अगर इसके ऊपर जाता है ना, देन दिस इज मच मोर, प्रोबेबिलिटी इसका बहुत हाई रहता है, इट्स मच मोर डूएबल। सो इवन इफ इट गोज अबव दिस CPR and closes and then gives you a follow through, you still have a lot of level to catch up for as in profit, जो मैं बता रहा हूँ। तो है अपॉर्चुनिटी है, बट ये जो मैंने ग्रे रेक्टेंगल बना रखा है, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, रेजिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट बना, फिर ये टूट गया। नाउ टू कंसिडर दिस एज अ फॉल्स ब्रेकर, इट नीड्स टू रियली डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑन द अपसाइड, ठीक है। लेकिन 012 पे छोटा स्टॉप लॉस है, इफ यू वांट टू टेक अ रिस्क, व्हाई नॉट। देन वी हैव हिंदुस्तान यूनिलीवर। नाउ हिंदुस्तान HUL में क्या है, एक रेक्टेंगल बना हुआ पड़ा है, यू कैन सी रेजिस्टेंस सपोर्ट, एंड वहां पे डेली में बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है with a 50% gap up opening today, right? Like 50% above candle. So if it gives you a follow through, then again you can, EMAs तक तो आ ही सकता है, if not more, क्योंकि bullish divergence तो है। अगर हम इसको भी आर्ली चार्ट में प्लॉट करेंगे, I think we are at S1. See, we are at S1. So this is, this can come back and pull back till the CPR if it has to. If you get a follow through, please always remember this, if you get a follow through, momentum रहेगा तभी ये सब होता है, and you can use a smaller time frame to trade those counter trends, so this is a counter trend, it might just come to EMAs or whatever, but there is an opportunity there, what I'm trying to say here. फिर हम आते हैं IDFC में। IDFC लिमिटेड, you can see there's a weekly bullish divergence here, है ना, and there is a daily bullish divergence as well। ये हमने लास्ट टाइम भी शायद बात किया था, सपोर्ट पे है, डेली में bullish divergence है, वीकली में भी अपटिक हो गया, which suggests decent price action।
डिसेंट प्राइस एक्शन हुआ इस वीक। अब हम इसको आर्ली चार्ट में अगर खोलते हैं तो आप देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है जो एक मंथली सीपीआर भी है। सो आइदर इट काइंड ऑफ गिव्स यू गैप अप, ऊपर जाता है एंड यू कैन टेक अ स्मॉल रिस्क अबाउट द मंथली सीपीआर एंड द वीकली डाइवर्जेंस स्टार्ट्स वर्किंग, और इट जस्ट डजंट वर्क, और इट जस्ट गोज डाउन एंड डजंट गिव यू अ ट्रेड। तो बोथ द केसेस आपको ये ध्यान रखना है कि हम इसको एंट्री कैसे करें। नाउ रिमेंबर गाइज, मैं ऑफ कोर्स आई डिस्कस वेरियस चार्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज, एंड यहाँ पे मेरे ट्राइब के अलावा और भी कुछ लोग आते होंगे पूछने के लिए कि कौन सा स्टॉक है, नई स्टॉक है, या आपको अगर आप आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है तो रिमेंबर दिस दैट येस, ऑन फ्राइडेज वी डू डिस्कस दिस सो दैट आपको समझ आए टेक्निकल एनालिसिस से हम एनालिसिस कैसे करते हैं। बट इससे ज्यादा और इसका आपके लिए रोल नहीं है। बाकी जो ट्राइब मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जिन्होंने सीखा है, ये उनके लिए हेल्पफुल है बिकॉज दे अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी हियर। ओके, देन वी कम टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेम सिचुएशन, वीकली बुलिश डाइवर्जेंस है, नाइस हैमर कैंडल। अगर आप देखोगे मैं इसको पहला रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, मे बी दिस इज चेंज इन पोलैरिटी हियर विद अ वीकली बुलिश डाइवर्जेंस विद अ डेली बुलिश डाइवर्जेंस आल्सो। ठीक है, तो इसमें भी अगर मैं इसको वापस अगर आर्ली चार्ट में लगाता हूँ तो आप देखो यहाँ पे सिंगल लाइन सीपीआर है, ट्रिकी, बट S1 से बड़ा है, एंड देन वी आर होपिंग फॉर द प्राइसेस टू गो हायर। इफ इट डज गो हायर देन यू कैन टेक अ call there. Okay, not call option, I'm talking with you can take a decision there. ठीक है, so IDFC First Bank is also in the list because of the same reason. फिर हम आते हैं आईजीएल में। आईजीएल इसलिए मैंने लिस्ट में रख रखा है क्योंकि यहाँ पे ये देखो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था, फिर ये ऊपर गया है, एंड यहाँ पे वी हैव अ ट्रिपल बेरिश डाइवर्जेंस विद अ प्रोबेबल 012। ओके, सो आप देखो यहाँ पे इट हैज करेक्टेड टिल 78.6 और आज एक डार्क क्लाउड कवर बना है। अगर हम इसको आर्ली चार्ट में जाते हैं देखने के लिए, सो R1 से गिरा, फिर ये R1 पे गया, एंड देन well it's supposed to like kind of if it does follow the entire thing, the entire divergence scenario, तो ये हो सकता है 012 करके गिरे। लेकिन अगर ये और ऊपर जाता है देन ऑफ कोर्स वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू। लेकिन अगर ये well technically previous week का लो टूटता है, but nonetheless if it kind of goes with a gap down or something then you can take advantage of that move as well। ठीक है, फिर हम आते हैं इंडिया सीमेंट में। इंडिया सीमेंट में भी अच्छा सेटअप है जो कि वीकली ईएमए पे दो हैमर बना हुआ है। प्रीवियस वीक भी हैमर बना था, दिस वीक आल्सो अगेन हैमर, एंड दोनों का हाई प्रीटी मच बराबर के आसपास है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट वी हैव अ बुलिश डाइवर्जेंस हियर विद अ फॉलो थ्रू एज वेल। सो इस वीक ट्रेड लिए तो लिए, वरना आप अगर अर्ली चार्ट में जाओगे आई एम श्योर ये S1 से आपको भागते हुए दिख रहा है, एंड यहाँ पे एक सीपीआर भी है। सो हो सकता है कि ये इस हफ्ते ज्यादा तेजी से नहीं जाए या तुरंत आ जाए इधर, लेकिन I see it doesn't really follow like CPR all the way through every month. So you can probably use a gap or something to take advantage of this. ठीक है, वीकली हाई टूटना जरूरी है, which is basically momentum। ये पर्टिकुलर वी जो नेकलाइन हम बोलते हैं डबल बॉटम का, ये नेकलाइन अगर टूटता है then this is a good setup to be in. All right. So India Cements again because weekly EMA daily bullish divergence, that's a good setup to be in. फिर हम आते हैं इंडिया मार्ट इंटरमेश में। इंडिया मार्ट इंटरमेश हम लास्ट 2 हफ्ते से बात करें क्योंकि जब से यहाँ पे डाइवर्जेंस था, लास्ट वीक भी हमारे लिस्ट में था, लास्ट वीक भी ऊपर गया, इस वीक अभी भी वापस ऊपर गया, ईएमए पे आया था, फिर वापस अपॉर्चुनिटी मिला, फिर ऊपर गया। सो दिस वाज अ सेटअप, दिस इज स्टिल अ सेटअप, यू कैन प्रॉब्ली स्टिल यूज इट। अगर आपको पुल बैक मिलता है ईएमए पे जहाँ पे आपको आर्ली में बुलिश डाइवर्जेंस मिले तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, so this is I'm still keeping this in the list because this is one of the good ones that have been working pretty well। ठीक है, फिर हम आते हैं JSW स्टील पे। JSW स्टील पे at weekly EMA again we had a bullish divergence, and is this a pullback? So again if I measure this pullback you can see here, right, 78.6% तक measurement होता है, and then here in the early chart you see there was a bullish divergence here with a 012 kind of setup. Now the best thing is that you can still use if you're interested you can still use these levels। ठीक है, यहाँ पे मंथली सीपीआर भी है, सो इसके ऊपर बंद होता है या ब्रेकआउट होता है देन यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मूव। okay, so that would be my plan if you were not already entered or if you're not using gaps or anything else। तो ये हमारा प्लान रहेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। फिर हम आते हैं एमएफएसएल पे। एमएफएसएल भी लास्ट टाइम हमने बात किया था कपल ऑफ वीक्स अगो कि ये वीकली
सपोर्ट पे आया है विच इज रेजिस्टेंस ब्रोकन, CIP ऊपर, फिर सपोर्ट, एंड सपोर्ट पे देयर वाज अ बुलिश डाइवर्जेंस हियर। ऑफ कोर्स हमने बोला था कि बेस्ट केस सिनेरियो होगा अगर ये यहाँ टेस्ट करके फिर हमें मूव देगा, लेकिन वो हुआ नहीं। ये ऊपर चला गया। अब एट डेली EMA पे है और हमारे पास आर्ली बुलिश डाइवर्जेंस था एट अबव R1 ऑफ द CPR। सो अगेन शायद आपको नहीं, अगर आप हमसे जुड़े नहीं तो आपको नहीं पता ये CPR कैसे काम करता है, बट ये यहाँ पे अगर डाइवर्जेंस बन रहा है देन दिस इज अ डिसेंट सेटअप एज वेल। ऑलराइट, सो this was MFSL which gave you a decent setup this week as well. Again next week भी ये setup अच्छा लग रहा है। फिर हम आते हैं मुथूट फाइनेंस पे। मुथूट फाइनेंस पे एट वीकली में प्रीवियस कपल ऑफ वीक से भी स्पिनिंग टॉप्स बन रहा है विच इज कंफ्यूजन कैंडल्स, अगेन सिमिलर कैंडल दिस वीक एज वेल, बट हमारे डेली चार्ट में बुलिश डाइवर्जेंस बना जा रहा है। अभी भी ऐसा कोई कैंडल बना नहीं था जैसे ये बना था ऑफ कोर्स, लेकिन अगेन यू हैड अ वेरी बिग ब्लैक कैंडल हियर which kind of cancelled it, but अभी भी it's breakout change in polarity, वहाँ पे bullish divergences बन रहे हैं, so you want a gap up or something that will help you trade this properly, है ना। आप देख रहे हो मंथली CPR से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, सो मे बी इट कम्स हिट्स, इट इज ऑलरेडी हिट इन S1 ऑलरेडी हिट कर चुका है, मे बी यहाँ पे कुछ हो और फिर आपको एक गैप अप मिले एंड आप उस ट्रेड को ले सको। सो आप पेशेंस भी रख सकते हो क्योंकि यहाँ के डेली कैंडल्स थोड़े साइडवेज हैं, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक काइंड्स, सो यू कैन वेट फॉर समथिंग एज वेल एंड देन टेक अ कॉल। सो ये स्टॉक को आप होल्ड मतलब वेट भी कर सकते हैं बिफोर यू गेट इन। ना इन्फो एज हमने इसलिए रखा है यहाँ पे क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, नौकरी में देयर इज अ हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट होने के बाद दिस सीम्स लाइक अ प्लेस वेयर इट शुड कम टू। नाउ ऑफ कोर्स प्रॉब्लम हियर इज दैट वीकली में बेरिश डाइवर्जेंस बन गया है व्हिच बेसिकली सजेस्ट दैट इफ कंफर्म मतलब बेसिकली इस नेकलाइन के नीचे अगर जाता है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज अगर इसके नीचे चला जाता है देन यू आर एक्सपेक्टिंग a downfall, okay, but nonetheless अगर सोचिए कल गैप अप हो जाता है and this tick down becomes invalid and ऊपर जाने लगता है, then you have a good move on the upside as planned last time according to a classical chart pattern. All right, so that is info edge for you. So अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है then of course you should keep this handy. Now then we have Nestle. Nestle है weekly EMA पे, you've got a nice harami pattern, bullish harami pattern here. And you've got a bullish divergence here as well. So this also suggests the prices should go higher. All right, this also suggests the prices should go higher. You can open an hourly chart, not the best price action here, but yes, if it goes higher, it can easily reach those CPR levels here. But setup है ना। Then we come to PEL. PEL last time भी हमने बात किया था, टिकअप हो गया था, इसका हाई नहीं टूटा लेकिन नॉट कन्विंसिंगली, देन नीचे आया, अगेन टिकअप स्टिल है, डोजी बना हुआ है एट सपोर्ट लेवल, यू कैन सी दिस पैरेलल लाइन दैट आई हैव ड्रॉन हियर, है ना। तो अगेन वी नीड लाइक एन इंडिकेशन दैट कैन वी एंटर दिस एंड वेयर कैन वी एंटर दिस। सो हम अर्ली चार्ट में जाते हैं, अगर ये CPR के ऊपर अच्छे से जाता है, जैसे यहाँ पे एंट्री मिला था बुलिश डाइवर्जेंस अर्ली चार्ट में S1 पे, ये सुंदर सा एंट्री था, बट नॉनदलेस अगर फिर मिलता है ऊपर गैप अप या गैप अप हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ये CPR के ऊपर बढ़िया से जाता है एंड फॉलो थ्रू देता है एंड वन कैन कंसिडर, ठीक है। सो यू नीड अ कंफर्मेशन, वीकली हाई टूटना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, डेली हाई ऑलरेडी टूट चुका है एंड दैट इज योर कंफर्मेशन टू गो लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। देन RBL बैंक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वी गॉट अ बुलिश डाइवर्जेंस इन द डेली चार्ट एट वीकली EMA, बट वीकली चार्ट इफ यू कैन सी इट इज एट अ रेजिस्टेंस एज वेल। तो यहाँ मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है, एक तो क्या ये ऊपर जाएगा, अगर ये लाइन के ऊपर चला जाता है देन वी आर लुकिंग टू गेट इन ऑन द लॉन्ग साइड। सेकंड, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट होके ये रीटेस्ट है क्या, तो उसके लिए हम अर्ली चार्ट खोलते हैं। अर्ली चार्ट जब खोलेंगे हम देखेंगे यहाँ पे छोटा सा बेरिश डायमंड, नॉट नथिंग सीरियस। सो बेस्ट प्लान वुड बी, हमारे पास मंथली CPR है यहाँ पे, ये 3 लाइन जो आपको दिख रहे हैं, अगर इसके ऊपर बंद होता है देन वी आर गुड टू गो लॉन्ग एंड इन दैट केस मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, ये जो ब्लू लाइन रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ है इसके ऊपर अगर जाता है देन वी आर गुड टू गो लॉन्ग, ठीक है। या अगर ये 012 सेटअप बनाता है विच इज बेसिकली अ रिट्रेसमेंट एंड देन kind of breaks out, then it is also decent. But for now, this looks like a retest, so it needs another couple of days or another couple of days or weeks for like a good confirmation on the upside. All right, but आप इसको हटा भी सकते हो, it doesn't matter for me. But this blue line here on the resistance side, that is pretty strong point of interest.
ठीक है, so I'm just going to remove this for now. फिर हमारे पास आता है लास्ट स्टॉक फॉर द इवनिंग इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट. टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट वीकली ईएमए, डेली में बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, बट अगेन मुझे लगता है अगर ये वैल्यू जोन डीपली आता नीचे तो मेरे लिए बेटर रहता. ये विक हो सकता है अर्निंग्स के लिए कारण भी आया हो. सो आई एम नॉट टू कन्विंस्ड विद दिस डाइवर्जेंस, बट सेटअप है. अगर फॉलो थ्रू आता है देन दिस समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन, देन दिस समथिंग दैट कैन गो हायर एज वेल. ठीक है. So these are the stocks in the purple list that we had. Now, whatever stock you want to discuss, please type it in the chat box. And meanwhile, I'm just going to discuss Nifty and Bank Nifty. So this is Nifty. Nifty आप देख सकते हैं. So let's start with monthly जैसे हम हमेशा करते हैं. Monthly में भी कुछ खास है नहीं. Weekly chart में भी ठीक है. There's nothing wrong or good, but there's nothing wrong either. Daily chart में if you can see, it is hitting those resistance zones. If you can see in my hourly chart also on the right hand side, it is hitting those those bearish level, that resistance level. But however, this is not really what can I say? It's not really giving me a selling sign yet, apart from like a daily poor candle. So वो होने तक का हमें wait करना है. That could be like a spike on a Monday and then fall, or that could be just नहीं होगा, because hourly में triple bullish divergence at daily ये में तो था ही. So this up move we took because monthly CPR के ऊपर था हमेशा, and the strategy of course we had discussed with our tribe earlier. So Monday would be a decider for Nifty, whether it's going to carry on going higher or it's going to correct and do something for the last period of the month before the expiry. Okay, so that is Nifty for you. Now coming to Bank Nifty, this is a very interesting chart as well. So monthly, as I said, there's a series of bearish divergences. So मैंने हमेशा बोला है, पास महीने से बोल रहा हूँ कि जितना निफ्टी नहीं है, निफ्टी इतना बेरिश नहीं है जितना बैंक निफ्टी था. ठीक है, हम लोग यहाँ से बात कर रहे थे ये स्वेज के एज में, एंड देन इट डिड फॉल. बट अभी भी इफ यू कैन सी हियर राइट, लास्ट 3 कैंडल्स, लास्ट 3 वीक्स, ये बार बार यहाँ पे एक डोजी, बुलिश हरामी, एंड देन अगेन हैमर दिस वीक. सो दीज आर ऑल बुलिश कैंडल्स, बट अगेन नॉट कन्विंसिंग इनफ. मतलब वो नहीं है जो जिसके कारण मैं वो बाय करने लगूं. लेकिन हमारे पास क्या है, you see this parallel channel here, right? I'm just going to make it thicker. Okay, this parallel channel here, this is resistance, broke out, it came back down again. Now यहाँ से last time resistance लिया था. आज भी if you see, there is a poor candle here. Okay, you can call it a confusion candle, you can call it a bearish a doji here, whatever it is, but it is a poor candle. Now when I come on to my hourly chart, so let me delete some of these lines. When I come to my hourly chart, you can see this, that the monthly CPR is right here. तो इसके ऊपर गया था, ये हमने नहीं लिया because we were always bearish at this level. So फिर we sold, we made money here. Bullish divergence बना जब hourly chart में at the gap. We weren't allowed to buy Bank Nifty, but we did buy Nifty. All right. And then now it is approached and it is come to again the CPR level. Now दो चीज हो सकता है, या तो मंडे को ये ऊपर गैप अप खुलेगा और फर्स्ट कैंडल विल क्लोज above the monthly CPR. Now if I show you the next layout, let's go there. Okay, let's plot our weekly CPR also. So if this was our Nifty trade, by the way, so let me open Bank Nifty quickly. ठीक है, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है. बैंक निफ्टी में if you see, we'll have a new CPR. So let's plot future pivot and let's see where that is. Input weekly, yes. So that will be our weekly CPR somewhere here. So it can pull back a little bit, मतलब ये यहाँ तक pull back करे और फिर जाके तोड़े तो भी ठीक है. फिर हम देखेंगे यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है कि क्या हो रहा है. लेकिन अगर मंथली CPR के ऊपर चला गया और ऊपर बंद हो गया बैंक निफ्टी, then from that point onwards we will be interested in buying using this weekly CPR. ठीक है, that would be the plan. Now for detail, of course, you need to kind of learn what I'm talking about. But how many of you did understand? How many of you were there for the session? Please type yes if you were. How many of you were there for that session? Please type yes if you were there, and please type yes if you understood what I'm trying to say here. Okay, so again, but if it does fall below the monthly CPR by creating a divergence, we're gonna short sell as well.
So हम देखेंगे मंडे, आई थिंक मंडे इज गोना बी द डे व्हेन इट्स गोना सेकंड हाफ ऑफ द फरवरी का पता चलेगा कि क्या होगा. ठीक है, so that is the plan for Nifty and Bank Nifty. All right, so I've got some stocks here. By the way, before I go on to stocks, we did discuss, हमने end of January हमने कुछ stocks discuss किया था. उसमें से एक rain industries था, and look what happened this month, right? You got a beautiful test. So हमने ये बात भी किया था, if you remember, this is a breakout of the trend, came back to the trend, tested it, and then a breakout with a gap up this week. So rain industry did well. Oriental अभी तक confirmation नहीं दिया, so we're still waiting. And Munjal Shaw, of course, it's already in the trend. ये resistance breakout के बाद, so हमने ये बात किया था, it's already in it. So we can't discuss that. There's no point discussing that. We've already discussed that earlier. ठीक है, तो मैं ये खाली बताना चाह रहा था. Apart from that, of course, we're gonna come back to our stock and we're gonna discuss this. Um, all right, so we've got Tanla. All right, so I think let's open Tanla. So this is Tanla ka, I think, chart. This is my weekly chart where there's a weekly gap down, I think, but daily mein banaya hua hai shayad gap down, yeah. And there was a bearish divergence with a pullback in RSI and kind of fell lower. Now, weekly at EMA, daily bullish, this could be like on the way on the upside also. But of course, it depends. You can mark this level. This is like a point of interest for this particular setup, because yeah, this could be a false breakout, went up, coming tested, bullish divergence है, not the best but है. इसका एक बार मंथली चार्ट देख लेते हैं. यहाँ से शुरू हुआ था, इट केम बैक ईएमए पे, फिर ऊपर गया, कंफर्म, हाँ हाँ ठीक है. अब फर्स्ट मंथली चार्ट, plenty of days to go, but it could go back up again here or somewhere. ठीक है, looks okay because daily divergence है weekly EMA पे, so looks okay, but it needs that momentum, मतलब ऊपर की ओर जाना जरूरी है. इसको अगर हम आर्ली चार्ट में खोलते हैं एक बार के लिए, हाँ, सो सी मंथली सीपीआर, अगर ये मंथ हो सकता है, ये मंथ ऐसे ही निकाल दे, तो नेक्स्ट मंथ में नैरो सीपीआर हो जाएगा, एंड देन इट विल गिव यू अ डायरेक्शन. दैट इज आल्सो पॉसिबल. ठीक है, इन टैनला. ऑलराइट, नेक्स्ट इज BEL. BEL weekly EMA, daily not a divergence, but weekly EMA पे है, तो you can probably use CPR to enter. Looks all right. आर्ली चार्ट में जाते हैं एक बार. हाँ, मंथली सीपीआर के ऊपर गया है, सो अगेन गैप अप खुलता है, या यू गेट अ फॉलो थ्रू ऑन द अपसाइड. अगर गैप डाउन खुल गया, ये वाले गैप के नीचे खुल गया, ओके, रिमेंबर आई एम नॉट सेइंग चला गया. अगर इसके नीचे खुल गया, देन दिस इज अ लोन बॉडी, मतलब ये एक, वी कॉल इट अ लोनर. सो फिर शायद टफ हो जाएगा, बट अगर ऊपर की ओर खुलता है, देन आई थिंक दिस विल गो हायर. पीईआर. ठीक है, सो दैट वुड बी द प्लान, बट इमीडिएट कोई डाइवर्जेंस वाइवर्जेंस वैसा कोई बात नहीं. PFC. PFC वीकली ईएमए पे है, डेली में अगेन डाइवर्जेंस नहीं है. लेट्स चेक द मंथली चार्ट आउट. या लुक्स ओके यार, आई मीन अभी कोई ब्रांड न्यू सेटअप नहीं है, बट there's a big fall till the CPR. अब यहाँ पे या तो एक और ऐसे डिप आए, यहाँ पे कुछ बनाए और फिर ऊपर जाए तो बेटर रहेगा. बट इन अ लॉन्गर टर्म, आई थिंक longer time format, I think it looks okay. I don't see a problem here at the moment. All right. RBL, I think RBL we've discussed. RBL हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी इन आवर लिस्ट. तो अतुल में आते हैं. अतुल, yes, I think I was waiting for an uptick. आप देख सकते हो डॉटेड लाइन, मेरा ये अलर्ट लगा हुआ है. So I was waiting for an uptick, which did not happen in the weekly chart, but it is at the support level. So if you see the monthly chart, कभी ये tick down हो जाता है, कभी blue रह जाता है. So if it breaks this red zone, then I need to think about something. But otherwise, अभी अगर यहाँ पे uptick हो जाए कोई एक week, like supposedly next week एक अच्छा uptick हो जाए MACD में, यहाँ पे डाइवर्जन बना के, then I think I would be interested in buying as well. ठीक है, so Atul, I'm waiting. Let's say I'm waiting. Vishakha Industries.
Vishakha Industries. Um, well, till the previous resistance गया तो था. Let's see. Earnings था इसका ना, इसीलिए शायद ये नीचे खुला है इधर earnings के बाद. Looks okay apart from there. See, technically speaking, there's a resistance here, right? But it is not like indicator wise, it is not saying कि अरे resistance ले लेगा या resistance अब यहाँ से गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. So looks okay. एक earnings, you know, me and my earnings की earnings के time हम trade नहीं करते. So earnings आया है इसलिए नीचे खुल गया है तो ठीक है, फिर हो सकता है ऊपर वापस चला जाए ये में से. So not a problem. Let's see gap कैसा treat करता है. जनरली ये gap बताता है, अगर ये इतना बड़ा gap है कि यहाँ पे आके फिर गिर गया, then something to think about. But अगर ये इसके ऊपर एक close हो गया and follow through दे दिया, then nothing like it. ठीक है, so shouldn't be a problem. All right. L&T. L&T weekly EMA daily no divergence, so divergence होता तो better होता, which basically means comes down here, does something and then goes back up. But weekly EMA पे है तो अगर इसका भी high टूटता है, you can probably यूज इट अर्ली में. देख लेते हैं एक बार कहाँ है सीपीआर. हाँ, समवेयर हियर. वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक वो सेटअप बना नहीं जिसके लिए मैं इस पे कूद जाता, बट लॉन्गर टर्म में ठीक ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस था इसलिए इतना गिर गया. ईएमए पे आ गया है. सो होपफुली इट क्रिएट्स समथिंग ड्यूरिंग like these couple of weeks and then does something next month. ठीक है. सेल. सेल भी एक रेजिस्टेंस पे, इफ यू कैन सी हियर ना मेरा वीकली जहाँ पे कर्सर है, बट अगेन इट डजंट से दैट इट्स गोना फॉल फ्रॉम हियर, राइट? ड्रामेटिक फॉल आ जाएगा ऐसा कुछ. बट इतना गिरा है तो एक डेड पिजन बाउंस आना था, वो आ गया है. नथिंग यार, मेरे पास कोई कमेंट नहीं है. लाइक लॉन्गर टर्म फ्रेम आई थिंक इट्स ओके. लॉन्गर टाइम फ्रेम में ठीक ही होगा, ठीक ही लग रहा है. लेकिन इट जस्ट डिपेंड्स हाउ इट क्लोजेस दिस मंथ. इसका मतलब नेक्स्ट 2 weeks शुड बी गुड फॉर इट टू बी ऑल राइट. ठीक है. डेंगी डम्स लिमिटेड. DANGE. डेंगी डम्स. ऑलराइट. वीकली बुलिश डाइवर्जेंस. या दिस लुक्स ओके. वीकली में डाइवर्जेंस है, मंथली में देख लेते हैं. मंथली ऊपर गया फिर ये में पे आया. बस मंथली का चक्कर गया ऊपर की तरफ. विक्स है ना, तो एक मंथली कैंडल लाइक इफ दिस मंथ क्लोजेस लाइक अ फुल वाइट कैंडल, देन ज्यादा बेटर रहेगा. वीकली में दो बुलिश डाइवर्जेंस था यहाँ पे, ठीक है, वापस आ गया एक सपोर्ट लेवल फॉल्स ब्रेकआउट करके. Yeah, I think if you put an alert here, like, and these levels break, then you'd be more confident on the upside. So looks okay right now. Daily chart देखिए फायदा नहीं है क्योंकि it's one of those stocks जो 12 रुपए का stock है. So but yeah, if it does give you a momentum on the upside, then this could be like a turnaround, है ना? लेकिन वो होना पड़ेगा. Then you have Titan. It is in trade to trade, so should we avoid? What is in trade to trade? What is in trade to trade? Please put in the box. Meanwhile, I'm just going to check in Titan company. Titan weekly EMA, yes. Once again, there's no bullish divergence. So will I wait? I would always give bullish divergence a priority, but nahi banta hai and you're still interested, then use CPR. So CPR के लिए हम 1 hour chart में जाते हैं, फिर देखते हैं कहाँ यहाँ पे है CPR, right? So maybe वही मुझे लग रहा है कि maybe this couple of weeks will do like come till here, maybe do something and then next week you get a trade on the upside. I think वैसा मुझे देख के लग रहा है. ठीक है, maybe or best if it comes down, creates a bullish divergence and gives you a trade. That would be best. ठीक है. So वो मेरा I think plan रहेगा वहाँ पे. All right, I think that's it, guys. Thank you very much. Thank you for being a part of this live. Okay, I've got NDR auto company straight to trade and chart is not clean, so should we avoid? Yeah, I think if the chart isn't clean, I generally don't get in unless कोई ऐसा ही fundamental है कि भाई अभी नया कंपनी है, चार्ट ही नहीं है, डेटा नहीं है, वो एक अलग बात है. लेकिन if the chart is not clean and if you can't analyze using charts, it's trade to trade, then there are plenty of fish in the sea, so why to trade this? All right, so thank you very much.
have a great weekend, enjoy yourself, and I'll see you on the other side. By the way, we are doing a fly series, financial literacy for youth, and it starts soon. So people who are interested in learning how to invest, especially young people जो 20 साल के हैं, जो कॉलेज में हैं, अगर आपको समझना है कि कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे सीखा जाता है investment at that age, do check those videos out on YouTube. It will come out very, very soon. So keep an eye out for that. Subscribe the video, subscribe to the channel as well, and take care. Bye bye. Yeah. Okay. Sorry, I have a question. Can I have a look at NDR Auto? All right, I'll just have a look. Yeah, I know there is a bullish divergence at weekly and all that, but yeah, ठीक है. Looks all right. Looks all right. So check monthly and weekly EMA पे है. Looks all right, I believe. But इससे ज़्यादा ऐसे stocks पे यार हम I seldom get in. All right. चलो. Take care. Bye bye guys. Thank you.